session. Now the best part is all of us are physiotherapists or we are going to be physiotherapists. हम सब एक बहुत अच्छा ड्रीम देखते हैं कि once I finish my bachelor's or once I finish my master's, I'm going to start up with a very good center or with a very good department in a hospital. पर अगेन जो मैं पिछले वेबिनार में भी 2 दिन पहले कह रहा था, एक इंटरनेशनल वेबिनार था और आपसे भी वहीं से स्टार्ट करता हूँ, हमने जो पूरी पढ़ाई की है और हमें जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, दोनों चीजों में काफी फर्क होता है. For example, if I ask all of you, those who are attending, how many of you wish to be a good physiotherapist? Just type yes in the chat box so that I can see. That's good. Yes, yes, yes. So that means हम में से अधिकतर एक good physiotherapist बनना चाहते हैं. Now there is a change in the question. How many of you wish to be a successful physiotherapist? Again, give me an answer, yes or no. You wish to be successful or not? Yes sir. Yes sir. Okay, जैसा सोचा था सक्सेसफुल में चैट ज्यादा आ रहे हैं, सक्सेसफुल में यस ज्यादा आ रहे हैं. अब हम पिछले दोनों क्वेश्चंस याद करें. मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ विश टू बी अ गुड, हाउ मेनी विश टू बी अ सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट. मतलब गुड और सक्सेसफुल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अगेन मतलब जो एक गुड फिजियोथेरेपिस्ट है, a good physiotherapist means a physiotherapist who's having complete knowledge of his subject, who's well versed with all the techniques, he was good in studies, he's good in mannerism, he's a good physiotherapist. But when I'm talking about the word successful, successful का मतलब ये है कि good होने के साथ साथ उनमें वो सारी क्वालिटीज भी हैं कि वो अपना डिपार्टमेंट, अपने हॉस्पिटल में अपनी पोजीशन या अपना एक सेंटर बहुत अच्छे से चला सके. और ऐसा हम हमेशा से देखते हुए आए हैं. ये जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हों उनका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रन करता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे उनका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं चलता. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पढ़ाई में मीडियोकर थे या मेरे जैसे बैक बेंचर्स थे, दे आर डूइंग गुड इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स नाउअडेज. यस और नो, जस्ट इन द चैट बॉक्स. ओके, दैट्स गुड टू सी. एम आई ऑडिबल? ओके ओके. सो कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, आप स्क्रीन पे देखिए. This is a young physiotherapist who's full of enthusiasm, like a superhero. एक छोटा सा सुपर हीरो है एक फिजियोथेरेपिस्ट. और जब भी हम एक छोटा सा सेंटर स्टार्ट करते हैं, अपना एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हैं, what do? We plan for a great center. बहुत अच्छा डेकोरेटेड इंटीरियर वाला सेंटर हो, फुल्ली इक्विप्ड सेंटर होना चाहिए with all the latest gadgets and machines. बहुत अच्छे हम एडवर्टीजमेंट्स देते हैं न्यूज़पेपर में. And the last point which I'll speak in a very dim language, that is brokerage. और जो कमीशन हमें कई बार देना पड़ता है अपने पास पेशेंट्स को भेजने के लिए. आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज को. तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर एक बहुत अच्छा सेंटर खोल लिया which is very well equipped and we have given good advertisements in the local newspapers and we have given some commission to the respected professionals, हमारे पास पेशेंट आने लग जाएंगे and from the day one we'll be very good in our practice and we will I'll just change the screen and we will be ready to fly. ऐसा ही लगता है हमें कि हमने ऐसा सेंटर खोल लिया and we'll be ready to fly. हमारी सक्सेस जबरदस्त आएगी. But when we talk in the real life, in real terms, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. जब हम ऐसे चलते हैं तो धड़ाम से आकर के गिरते हैं. We lost our monetary aspect, we lose our reputation, we lose our goodwill. And what happens ultimately, जब हम धड़ाम से आके जमीन पे गिरते हैं तो हमें उठने में बड़ी दिक्कत है. इसका मतलब जब भी हम अपना एक डिपार्टमेंट, अपना एक सेटअप स्टार्ट करें, हमारे पास एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि हमारे पास पेशेंट्स कहां से आए. नो डाउट, इफ आई एम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, गौरव भटनागर सर मोस्ट वेलकम. इफ आई एम अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, दैट डजंट मीन आई विल बी डूइंग अ गुड सेंटर आल्सो. मेरा सेंटर तब अच्छा चलेगा जब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे. और मेरे पास पेशेंट्स कब आएंगे और कैसे आ सकते हैं, उसके कुछ छोटे से सीक्रेट्स मैं आपसे इस सेशन में शेयर करता हूं. हमारी जो प्रोग्रेस होगी और हमारी जो सक्सेस होगी, दैट विल बी इन अ स्टेप लैडर फैशन. हम बिल्कुल रॉकेट की तरह कभी भी उड़ने का सपना नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू आवर फॉल. हाउ वी शुड प्रोसीड इज वी शुड प्रोसीड स्टेयर वाइज, स्टेप बाय स्टेप. हेलो सर. हेलो. बिकॉज हेलो, शैल आई कंटिन्यू? या continue? Yeah. Okay.
So this is a small tips how we can plan to increase number of patients to our physiotherapy setup. First of all, a very important thing, we have to have a strong professional bonding. What does the word professional bonding means? Professional bonding means all the medical professionals and all those people who can refer prospective patients to us. वो medical professionals या वो लोग जो हमारे पास patients refer कर सकते हैं निकट भविष्य में, हमें उनके साथ एक बहुत अच्छी bonding करनी चाहिए. Now in this word bonding, I don't mean that we should give some commission to them. What I mean is we have to show them what physiotherapy is and what we are capable of, because it has been proved in the research studies that 90% of the population, even of United States of America, they don't know what a physiotherapist does. हम अमेरिका को सबसे ज्यादा समृद्ध देश मानते थे और मानते हैं, जब वहां की रिसर्च में प्रूव हो गया कि 90% लोगों को यही नहीं पता फिजियोथेरेपिस्ट का वर्क क्या होता है, तो आप सोचिए हमारे देश में क्या हाल होगा. जब लोगों को नहीं पता है, एंड आई एम सरप्राइज एंड आई एम सॉरी टू से कि कई बार मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, बिकॉज दे आर ओनली यूज्ड टू द वर्ड्स लाइक शॉर्टर डायथर्मी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस. They are not used to our manual therapy techniques, which are our core, which are our heart of the professional physiotherapy, like Mulligan, Maitland, PNF, MET, MFR, dry needling, cupping therapy, ये सब का उन्हें इंडिकेशंस, डोसेज पता भी नहीं है. इसीलिए हमें सबसे पहले हमारे नियर बाय जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें हमारी वर्क प्रूव करनी है. अब वर्क प्रूव करने का मतलब ये नहीं है हमें एक एक को जाके बताना है कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है. हमें उनको फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयर करना है. एंड जब उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आप सब प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आपके हॉस्पिटल के किसी ऑर्थोपेडिशियन को नेक पेन होता है और आप एमएफआर से उसको रिलीव कर देते हैं, तो उसका फिजियोथेरेपी पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाता है, और उनको ये समझ में आ ही जाता है कि फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली इलेक्ट्रोथेरेपी गैजेट्स, इट इज मच मोर देन दैट. तो हमें अपनी प्रोफेशनल बॉन्डिंग बढ़ानी है, बी इट with the medical professionals, doctors, pharmacists, nursing staff, sports coaches, sports teams, क्योंकि ये सब ऐसे एवेन्यूज हैं जहां से हमें पेशेंट्स मिलते हैं, तो हमें हमारी बॉन्डिंग वहां पे बढ़ानी है. Coming to the next point, communicating with the community. I have given a very small topic just because of the reason communicating with the community. Community हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, हमारी पूरी सोसाइटी, दैट इज कम्युनिटी. कम्युनिकेशन, हमें हमारी सोसाइटी को कम्युनिकेट करते रहना होगा, हमें उनसे टच में रहना होगा. एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो हम लोग कई बार करते हैं और हमें करते रहना चाहिए, वी शुड एंगेज इन हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स. आपके नियर बाय जितने भी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Type yes or no. Yes sir. If you are getting my voice. Yes sir. अच्छा सर, 2-3 मैसेज आए हैं सर, we are unable to hear, that is why. Okay, so I'll be communicating again. Communicating with the community. We all live in a society where we have many NGOs around us. We have many social clubs like Rotary, Lions Club with us, and these sessions and these NGOs, these groups are doing a much for the society. अगर हम उनके साथ जुड़ के एक फ्री फिजियोथेरेपी कैंप कर रहे हैं, my dear friends, it is not a loss to our practice. हम में से कई लोग सोचते हैं कि फ्री करने से क्या मतलब, हम तो अपने आप को कमा ही नहीं पा रहे हैं. अगर आपने वहां पर 100 पेशेंट्स अच्छे से देखे हैं, दैट इज फॉर श्योर उनमें से 10 आपके पास आएंगे. तो आपने अगर किसी संडे को एक कैंप किया और मंडे से आपके पास 10 पेशेंट विद पेमेंट आना शुरू हो गए, इससे अच्छा तो कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वी यूज्ड टू गिव थाउजेंड्स रुपीस के एड हम न्यूज़पेपर में देते हैं, उसके बाद भी हमें श्योर नहीं होता है पेशेंट आएगा कि नहीं. सो वी शुड कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी. सेकेंडली, okay, coming on to the next point, media for advantage. Whenever we are promoting ourselves, whenever we are promoting our clinic, whenever we are promoting our center or hospital, what we do commonly is we give advertisement in newspaper.
और नए फिजियोथेरेपिस्ट भी यही करने को मजबूर हो जाते हैं। हम किसी एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, बट न्यूज़पेपर में ऐड देना हमें बहुत महंगा पड़ता है। होता है कि नहीं? सिर्फ यस और नो से जवाब दीजिए मुझे। आई थिंक एक छोटे से छोटा ऐड 10 से 15 हज़ार रुपए से कम का नहीं होता है, और 10 से 15 हज़ार रुपए का ऐड देने के बाद भी अगर हमारे पास पेशेंट नहीं आता है, तो सोचिए एक नए फिजियोथेरेपिस्ट के पीछे कितना फाइनेंशियल लोड आ जाता है। नाउ टेक इट इन द अदर वे। हम सोशल मीडिया पे या हम प्रिंट मीडिया में हमारा ऐड दे रहे हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट श्योर कि हमारे पास पेशेंट आएगा कि नहीं। कांट वी डू इट सम अदर वे? अदर वे इन द सेंस, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम मीडिया में ऐसी कोई न्यूज दें कि वो उसको छापे भी, और अगर वो न्यूज को छापेंगे दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली फ्री ऑफ कॉस्ट, और दैट माइट बी नॉमिनली चार्जेबल फॉर यू, और बिकॉज ऑफ दैट न्यूज आपके पास पेशेंट्स का इनफ्लो आना बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या फ्रोजन शोल्डर, आई एम यूजिंग द वर्ड फ्रोजन शोल्डर बिकॉज अगर हम पेरिआर्थराइटिस और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस अखबार में लिखेंगे तो 90% पॉपुलेशन वो वर्ड नहीं समझ पाएगी। हम फ्रोजन शोल्डर लिखेंगे तो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। व्हेन वी राइट PIVD लोग नहीं समझते, पर अगर हम लिखते हैं कमर का छल्ला सरक जाना या कमर में दर्द, पीपल रिलेट टू इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने कोई फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट मान लीजिए 10 सिटिंग्स में ठीक किया, और अगर उसको पिछले 6 महीने से तकलीफ थी, आपने उसकी एक स्टोरी बना के न्यूज़पेपर में दी। जब उस स्टोरी को एक फ्रोजन शोल्डर वाला पेशेंट पढ़ेगा, 100% चांसेस है वो आपके पास आएंगे, या आपके पास नहीं तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाएंगे। That is, we are using the media, but we are using the media for our advantage. Otherwise, what we do, we use media for their advantage. हम मीडिया में न्यूज़पेपर में ऐड भी देते हैं, और उसके बाद जो पैसा लगता है उससे मीडिया का भला हो रहा है, हमारा भला नहीं हो रहा है। यहाँ हमने एक स्टोरी दी जो हमारी फ्री में या बहुत कम पैसों में छपी, और उसके बाद हमारे पास पेशेंट टर्न होना शुरू हो गए। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। नाउ शेयरिंग with you a very realistic news जो आपके सामने आप देख रहे हैं। भुवनेश्वर इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। यू कैन गेट दिस न्यूज़पेपर कटिंग इन द न्यूज़पेपर या इन द ऑन द गूगल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, और डायग्नोसिस के कारण उनको वापस से गेम में खेलने भेज दिया गया। वहीं पर NCA, नेशनल क्रिकेट एकेडमी ऑफ इंडिया, NCA के चीफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आशिक कौशिक, उन्होंने उनको एक बार असेस किया, और उन्होंने असेस करने के बाद ये डायग्नोसिस किया कि इनकी कंडीशन इतनी पेनफुल है कि इनको अगर ये आगे खेलेंगे तो इट में डिटीरियोरेट, और उसके बाद उनका मैच खेलने का डिसीजन रोक दिया गया। बताने की बात यहाँ पर यह है कि उनका 2 से 3 बार स्कैन हो चुका था, और स्कैन के बाद भी डायग्नोसिस नहीं मिला था। बट यहाँ पे एक फुल्ली एक्वेंटेड, फुल्ली अपग्रेडेड नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ फिजियोथेरेपिस्ट ने जब उनको असेस किया, और असेस करने के बाद बताया कि इनकी ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम के बाद उनको रेस्ट दिया गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया। तो आप सोचिए कि एक तो उस प्लेयर का कितना भला हुआ, बिकॉज ऑफ हिम द टीम इज इन एडवांटेज, एंड मोस्ट अबव ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट का रिस्पेक्ट उस टीम में और NCA में कितना बड़ा है। और जब ये न्यूज किसी नेशनल न्यूज़पेपर में आ रही है, तो सोचिए ऑल ओवर द इंडिया फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का कितना गुडविल क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड यूज मीडिया फॉर आवर एडवांटेज। हम में से बहुत से लोग, नाउ दिस कम्स अ कैच वर्ड, ये आपको थोड़ा ध्यान से सीखना होगा, बिकॉज ये हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में नहीं आता है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात शेयर करता हूँ। When we wish to be successful in our field, we need to take care of 3 C's. C for cat. We need to take care of 3 C's. Those 3 C's are clinical expertise, commercial skills, and customer service, or client service, or patient service. हम जो पूरा BPT में पढ़ते हैं और जो पूरा MPT में पढ़ते हैं, that is only clinical expertise. We are never taught commercial skills और कस्टमर और पेशेंट और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। इसमें से कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे पेशेंट एथिक्स, फंक्शनल आउटकम असेसमेंट मेजर्स, क्लिनिकल रिहैब वाले सब्जेक्ट्स में होते हैं,
बट आई एम सॉरी टू से हम में से बहुत सारे वो वाले सब्जेक्ट सिर्फ फोटोकॉपी के फॉर्म में पढ़ते हैं और वो फोटोकॉपी एक बैच से दूसरे बैच में शेयर होती चली जाती है. What I'm trying to say is we read only the academic part, but when we wish to be successful, हमें कैसे अपने आप को स्टैंड है वो सारी स्किल्स भी आनी चाहिए. अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है, इसलिए मैं आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग की सिर्फ कुछ पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. जब कभी हमें पूरा टाइम मिलेगा, इस पे फुल डे का सेशन होता है कि हम अपने आप को कैसे ग्रूम करें, अपने डिपार्टमेंट को कैसे अपग्रेड करें और उन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से अपना रेवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़ाएं, जो अनडाउटेडली हर फिजियोथेरेपिस्ट का एक सपना होता है कि मेरी इनकम जबरदस्त हो. ऑब्वियसली हम सब काम इसीलिए कर रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द ट्रिप वायर स्ट्रेटजी. ट्रिप वायर, हैव यू एवर एक्सपीरियंस, हम में से कभी कोई बिग बाजार या किसी शॉपिंग मॉल में गया एंड जस्ट ऑन एंटरिंग यू आर ऑफर्ड वेलकम गिफ्ट, या आप किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए एंड यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर, या हम में से कोई डिस्कोथिक या पब में गए एंड यू गेट पीनट्स एज कॉम्प्लीमेंट्री. व्हाट इज दिस? They are giving you some free of cost, sell you a bigger thing with much higher price. एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स में कई बार ऑफर निकलता है कि आप अगर कॉम्बो मील लेंगे तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री आएगा. अगर आप कॉम्बो मील लेंगे तो कोल्ड ड्रिंक फ्री आएगा. So what happens? Okay, I'm speaking in English. Doesn't mean okay. What happens whenever big professionals or whenever big marketing persons they try to sell their products or services, they can't sell a huge product with a high price directly to a new customer. What they do is they offer something either free of cost or with a very lesser amount so that a person gets attracted, he comes to the funnel और उसके बाद उनको एक बड़ा सर्विस ऑफर किया जाए. Coming to our field, how this applies to our field, this is very common. Whenever we are treating a patient, for example, you are treating a patient for, let's say, plantar fasciitis. It has been around 6 to 7 sessions you have been treating in, and nowadays you are on the final stage of treatment because you have applied dry needling or might be cupping or some other techniques, and he is saying that, sir, I'm having 90% of relief in pain. Now you have in the backup of your mind that hardly 2 more sessions and this patient will be perfectly all right. What you are trying to think is how this patient gets convinced that in future, if he or she is having any other problem or any of his known is having some problem, he should come directly to. ये हमारे मन में एक thought आता है. Now what can be done is during the last session when he is around 90% or more all right, what we say is, sir, can you give your feedback regarding your experience here? Obviously, he'll give your feedback. He'll give his feedback in a very positive way. This feedback will be somewhat likely. I have been coming here since last 6 sessions, and today I'm feeling 90% better. I recommend this center to everyone. The environment and the treatment techniques here are very good. This is it. Now the catch here is, हम लोग इसके आगे नहीं सोचते. The catch here is, you can just say him, sir, because you are our elite patient and you are getting all right, we have a special fee for you. We have a special free service for you. We will assess the muscular flexibility of your appendicular muscles, of your both upper limbs and lower limbs. We will assess the muscular flexibility, and then according to muscular flexibility, we will tell you आपकी कौन सी muscles में tightness है, problem है, and what sort of exercises you need to do. He'll be very happy because he got the term that you will be doing his assessment free of cost for today. आपने उनका assessment किया. You assess the flexibility of mainly the skeletal muscles of upper limb and lower limb. You wrote down in the evaluation form. You gave him the form and you told him, sir, your right side hamstrings is tight, the calf of left lower limbs are tight, and your triceps are having DOMS, delayed onset of muscle soreness, because of your gym works which are higher to your capacity. He got alarmed. This person has checked me and he's telling me these muscles are tight and these are having soreness. He will immediately ask, hey physio, hey doctor,
what should be done to get relief of this? Sir, iske liye we need hardly 6 to 7 sessions. We will make your muscles supple and flexible with very less or minimal pain, and then you can do exercises on your own. There are chances that he'll get convinced, or at the most what he'll say, sir, I'll try to come after 5-6 days because I have some work, but surely I'll be coming. See what you have done. You have treated him, you have taken full amount for the treatment. At the last session, you have given him a freebie, a free assessment of muscles. Because of that assessment, you came to know कि ये वाली muscles tight है, and because the muscles are tight, you created an avenue for the re-treatment of that patient. This is tripwire strategy. You are offering a free service so that in future you get paid for the heavy services which we offer. So we should take care of the tripwire strategy. Retention. Before explaining this, I will again like to explain you one more thing. Just write in the chat box, any of you who have been practicing Pilates. Just write me in the chat box. Any of you who had been practicing Pilates? Okay. Okay. Now, any of you who have been practicing pelvic floor exercises with the patient? Any of you who can share that, who have been practicing pelvic floor exercises with the patient? Okay. Now, to your surprise, I'm going to tell you something. There is a physiotherapist in Australia, and not today, many years back, that physiotherapist, she developed an interest in the rehab of pelvic floor muscles. She updated ourselves, she updated herself, she studied very much, and what she did was she wrote 2 books on maternal health and incontinence rehabilitation. Those books were a big hit because this was the most uncovered topic. Because she came to know that many people are interested in these topics, and this is a problem of large group of female population. What she tried was she tried blogging. She tried blogging, and she wrote hundreds of blogs on the social media platforms, and she got tremendous response. Now just imagine a female working on pelvic floor muscles, that is getting her specialization. Many of us never ever think of only working exclusively on pelvic floor muscles. What I'm trying to say is she had developed her specialization, she worked on that, she developed the passion, and eventually what happened? She wrote 2 books which are short hit. After that, she wrote many blogs. Because of that, she developed a big database of patients. That's good, Dr. Shalini. You are doing it. Congratulations to you. That's what I'm saying. Few of us are doing, many of us have to do. So what she did is, after the blog, she got an idea. Why should not I start an exclusive physical therapy studio for pelvic floor muscles? And in Brisbane, she started a physiotherapy pelvic floor muscle studio. Now just imagine, here we all are working on all the conditions in our physiotherapy department, and then also most of us are struggling for the patients. We are not getting enough patients, and there are people who are working exclusively on a specific muscle group, and they are getting that many patients that they have to keep subordinates to schedule the appointments. They get subordinates to schedule the appointment. Just think, how come, what is the role of specialization in nowadays era? And again, coming to my slide, what I mean to say is, it is very tough to get new patients in a new setup. When you have established yourself, when you have established your clinic since last 5 to 10 years, there are many patients which through word of mouth convince others, and people and patients coming to you. But when you are a new therapist, or when you have opened up a new center in some city, you should take care of those patients which are regularly coming to you. Because a patient who's coming regularly to you, retention, just holding those patients, holding का मतलब ये बिल्कुल नहीं है हमें उन्हें ठीक नहीं करना है. Holding का मतलब ये है
we need to treat them, and we need to tell them what all conditions we treat, how physiotherapy and how myself as a physiotherapist is beneficial, and that will be much more helpful because that patient will be going out, and by his or her word of mouth, he will be getting more patients to your clinic or to your center. So this is a very sound technique, that we need to work on retention of the patients more than the conversion of the new patients. As this is going to be the last slide, I will just try to give you a take-home message. As the timings were limited, I just tried to convince a few iceberg points. We can talk on whole day, and there is a training session for this, but there is a take-home message. We should read what others are not reading now. We should think what others are not thinking now. Then we should be definitely doing what others are not doing now. हमें वो करना है जो दूसरे अभी नहीं कर रहे हैं, हमें वो पढ़ते रहना है जो दूसरे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, और हमें वो सोचते रहना है जो दूसरे अभी नहीं सोच रहे हैं. If we follow this, definitely we will be a sure shot good successful physiotherapist. Thank you very much. Over to you. Thank you so much, sir.